हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। जो पहली प्रॉपर्टी है कोरिलेशन की, दैट इज और हैज नो यूनिट। और हैज नो यूनिट, दैट मीन्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका कुछ नहीं है। इट मीन्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और नॉट पार्ट ऑफ और। इट मीन्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल केजीज है, मीटर्स है, जो भी यूनिट हम मेजर करते हैं, एम्पियर है, और भी जो भी यूनिट हम मेजर करते हैं, इट मीन्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट और नॉट पार्ट ऑफ द कोरिलेशन। इट मीन्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और नॉट पार्ट ऑफ or not part of or means correlation, coefficient of correlation. So this is first property. Second property, negative value of or. If or has negative value, if or's value is negative, it is in minus. That means negative value of or shows inverse relationship or opposite relationship between the two variables. Inverse relationship between the variables. If इसका दूसरा साइड जो है, अगर और नेगेटिव है तो इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर और पॉजिटिव है, इफ वैल्यू ऑफ और इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है और का वैल्यू, the two variables move in the same direction. That means the two variables move in same direction. अगर और नेगेटिव है तो उसका मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप, अगर और पॉजिटिव है इसका मतलब है पॉजिटिव रिलेशनशिप, और they move in the same direction. In negative value they move in the opposite direction, जो हमने डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन में क्लियर किया है. If or has zero value, or if or is equal to 0, there is no correlation between the variables. No relation. There is no correlation. There is no correlation or relation between the variables. अगर और का वैल्यू 0 है तब वहां कोई कोरिलेशन नहीं है. The values or variables are uncorrelated. They are uncorrelated. नेक्स्ट है फोर्थ, इफ और इज इक्वल टू 1 एंड और इज इक्वल टू -1. अगर और का वैल्यू एग्जैक्ट 1 आ गया और एग्जैक्ट -1 आ गया, द रिलेशनशिप इज परफेक्ट और प्रपोर्शनेट. द correlation is perfect. The correlation is perfect or proportionate परफेक्ट है या प्रोपोर्शनेट है, बराबर. जितनी चेंज एक में आ गई उतनी ही चेंज दूसरे में आ गई, आइदर नेगेटिव चेंज और पॉजिटिव चेंज. अगर एक 10% चेंज हो गया, दूसरा भी बराबर 10% चेंज हो गया, दैट इज प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप. दैट इज परफेक्ट प्रोपोर्शनेट. दैट मींस अगर एक इंक्रीज हो गया 10%, दूसरा भी इंक्रीज हो गया 10%, तो उस वक्त और का वैल्यू 1 आ गया. दैट मींस बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन. अगर एक इंक्रीज हो गया 10%, दूसरा डिक्रीज हो गया बराबर 10%, इक्वल 10%, तो उस वक्त और का वैल्यू -1 आएगा. That means they move in the opposite direction. A high value of R indicates a strong relationship, that is +1 and -1. That means a high value of 1 means high value और -1 means high value, highest value. तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया है that the correlation value ranges from 0 to 1. तो अगर 1 आ गया, ये
परफेक्ट पॉजिटिव है, अगर -1 आ गया ये परफेक्ट नेगेटिव है. दैट मीन्स ए हाई वैल्यू ऑफ और shows strong linear relationship, that is +1 and -1. Fifth property क्या है? The value of correlation coefficient lies between -1 and +1, that is this and this. The value of or lies between +1 and -1, lies between +1 and -1, that is or is value of or is less than or equal to 1 +1, and it is more than or equal to -1. और का वैल्यू जो है वो +1 से कम या +1 के बराबर होगा, और का वैल्यू -1 से ज्यादा होगा या -1 के बराबर होगा. So this is very important property of correlation, that is value of or lies between +1 and -1, or it can be +1 and -1, that is or is less than or equal to 1 and or is greater than or equal to -1. So these are some important properties of correlation. One is or has no unit, that is it has no unit of measurement. Any unit of measurement is not related with or, that those are related with the values of the variable. Negative value of or shows inverse relationship between variable, and if value of or is positive, the two variables move in the same direction. That means अगर or का value negative है, there is inverse relationship, opposite relationship, negative relationship between two variables. अगर or का value positive है, the two variables move in the same direction. If or is 0, no correlation, no relation. Uncorrelated variables are uncorrelated. If r is equal to 1 or r is equal to -1, the correlation is perfect or proportionate. So last wala hai or ranges between -1 and +1 or equal to +1 or -1. So these are the properties of correlation. Thank you very much.